हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए वेरी बेनिफिशियल होने वाली है, जो कि पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम PYQs करेंगे ईयरवाइज, जो कि पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, यानी कि 2021 दिसंबर से हम शुरू होंगे और 2025 दिसंबर तक हम करेंगे। नाउ क्या मैं एलिजिबल हूँ आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए? क्योंकि मैंने UGC नेट 2025 जो जून में हुआ था और जो दिसंबर में हुआ था, ये दोनों ही क्वालिफाई कर लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। तो मैं आपको बताने के लिए सही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2021 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको पता ही है कि वो पेपर 1 के होते हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को बिलोंग करता है। तो हम 51 क्वेश्चन से देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग identical two types of inequality? So first is Thomas Hobbes, B option John Locke, C J Rousseau and D Montesquieu। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन C is correct। Now let us discuss something more. I have written the additional information or the thing you need to know more or the analysis of the question alongside the question itself. You can see here. So हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। सो ये बोलता है कि उसके 1755 के वर्क में, जो कि है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, जो जे रूसो है वो डिस्टिंग्विश करता है 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। फर्स्ट इज नेचुरल, जो कि नेचर फिजिकली होती है, जैसे कि नेचर पे एज, हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ माइंड एंड सोल। सेकंड इज मोरल और द पॉलिटिकल, दैट इज inequalities created by human convention or consent between the weak differences such as differences in wealth, nobility, rank and power. So the next question is, which of the following is an essential condition of democracy? This is the easy question. For the most of easy question, I have not done anything because I think this is a very simple question to discuss. So you can know that democracy is about the form of government in which the power resides with the people, because people elect their representative among themselves only. So there will be liberty, of course there will be liberty, there will be equality, that's of course there will be independence of judiciary, of course independence of judiciary, and there will be committed judiciary. No, committed judiciary will not be there. So he say not and future, so it is not. Then answer is D. Answer is D. Now committed judiciary means judiciary which is committed towards the judiciary which is committed towards the present government or the present government. So the next question, who among the following define socialism as a chameleon which changes its colors according to the environment? And the answer to this question is option C. I don't know this question, so let us discuss. Who is he? Ramsay Moore. He famously compared socialism to the chameleon, noting that it changes its color according to its environment, appearing as a different doctrine dependent on the country or political climate in which it is presented. Okay, so he says कि जो सोशलिज्म है वो एक गिरगिट की तरह है जो रंग बदलता है। वो रंग कैसे बदलता है? इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाए तो रंग बदल जाएगा, कंट्री के अकॉर्डिंग रंग बदल जाएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका रंग बदल जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप सोशलिज्म की बात करें तो इंडिया में सोशलिज्म एक फिर सोशलिज्म है, अगेन देयर इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन भी है। वेयर एज इफ़ यू गो इन समवेयर
For example, in Russia, there is a mix, pure that is socialism is there. So next question: which of the following books is not written by Michael Oxford? First is Experience and its Modes, Nationalism in Politics, The History of England, Introduction to Leviathan. So the answer to this question is option C, The History of England. Now, the Experience and its Modes, one of the Oxford most significant philosophical work is this is the one of the most significant work. Second is the Rationalism in Politics, which is a famous collection of essays criticizing modern rationalism. Next is the History of England. The title of most famously associated with David Hume or the Thomas Babington Macaulay. So this is not written by Oxford, Mitchell Oxford. Sorry, Michael Oxford, not Mitchell. Introduction to Leviathan. Now you may be confused that Leviathan is written by Hobbes. Let us see. Oxford wrote well-known and most influential introduction to the Thomas Hobbes Leviathan. He just wrote the introduction to Leviathan. Leviathan, not Leviathan. So next question. Who wrote the paper entitled A Discourses on the Effect of the Art and Science? The answer to this question is D. The Discourses on the Art and Sciences written by J.J. Rousseau. Next question. Who among the following authored Black Skin, White Mask? Who among the following wrote Black Skin, White Mask? And the answer to this question is option B. Frank Fanon. This is a fair enough facts. You have to mug up the fact. You have to. It is very obvious that NTA all ask the questions. That is the books and the book's name author. You need to remember these things. In which of the following book, The Politics of Politics, Aristotle justifies slavery? It is answer book 1. When was the Hegel book Philosophy of Rights published? The answer to this question is option B, that is 1821. Now, Kautilya's theory of Rajamandala belongs to first social structure, second economy, third foreign policy and interstate relation, D structure of dharma. So the answer to this question is it is about the foreign policy and the interstate. Let us see some additional information about this. The concept of Rajamandala is a conceptual circle of states used to analyze the foreign policy and diplomacy. Very important book of the ancient India. It is based on the geographic principle that your neighbor is your natural enemy, and your neighbor's neighbors is your natural friend. It provides a framework for the king to manage alliance and hostilities with surrounding kingdoms to maintain power and expand territories. So this is the question. Next question. I hope you understand nothing important here. कि वही बोल रहा है कि वो एक कंसेप्चुअल सर्कल की तरह बात करता है कि जो तुम्हारा एनिमी है वो तुम्हारा नेबर है, वो तुम्हारा नेचुरल एनिमी हो जाएगा, वो तुम्हारा नेबर का नेबर है जो वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा. होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस उसी के रिलेटेड ये चीज़ है. So next question, when and who launched self-respect movement? It is very simple question, very obvious. If you have studied a little bit modern history, you might know it is Periyar. 1925. So founded in 1925 by S. Swaminathan and E. V. Rama Swami, that is also known as Periyar in Tamil Nadu. It is found in Tamil Nadu. Remember this fact. Next question, question 61. Who talked about synthetic universalism? I think it is Tagore. Rabindranath Tagore talked about this synthetic universalism. Tagore's philosophy emphasized a harmonious blend of Eastern blend of Eastern values and Western scientific progress.
advocated for a world that transcends narrow nationalist boundaries in favor of a unified humanity. So he just blend synthetic universalism in he just blend the West scientific knowledge and Eastern spiritual values. You need to understand this thing only. So the next question is Dr. B.R. Ambedkar paper Small Holdings in India and Their Remedies is related to. So it is related to, as you have seen, the small holdings of what it is. Obviously it is related to agricultural system. And if you don't know, you can use your logic here, common sense. You can come to arrive to the answer. बड़े आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाते हैं अगर आप लॉजिक लगा लेते थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1918 पेपर स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज focus on economic challenges of the Indian agricultural system. Indian agricultural system. In this work, he argued that subdivision and fragmentation. Primary issue was not just small holdings of lands, but their fragmentation into scattered plots. For example, मेरे पास ज़मीन तो है पर मेरी स्कैटर्ड है. मेरी थोड़ी ज़मीन यहाँ है, 2 बीघे यहाँ है, 2 बीघा वहाँ है. मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा, मैं कैसे उसकी खेती बाड़ी उसमें करूँगा, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी जो है चैलेंजिंग होती है. इसलिए ये बोलते हैं. सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए remedy. He proposed that the solution lay in rapid industrialization, which would move surplus labor away from agriculture, making more farming more efficient and economic viable. ये बोलते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. समझ आ गया होगा, ये आसानी है. एक तो वो चैलेंज के बताते हैं कि सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन है, दूसरा बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट, who described the process of modernization as a multifaceted process involves changes in all areas of human thought and activities. So the answer is, I think, Samuel P. Huntington is the answer to this question. Yes, Samuel P. Huntington. Samuel P. Huntington described modernization as a multifaceted process involves changes in all areas of human thought and activities, emphasizing that it encompasses urbanization, industrialization, secularization, and democratization. Urbanization, industrialization, secularization, and democratization. So the next thing we'll see. Who among the following look at revolution as a sweeping fundamental change in the predominantly myth of social order? The answer to this question is option A, that is Newman. I have not given any. You can see that the sweeping fundamental change into the predominant myth of social society, though it is a Newman. Just remember this much only. He just see the it as a revolution. उसने क्रांति की तरह बोला इसको, ये क्रांति है कि फंडामेंटल चेंज हो रहा है सोसाइटी में, सोशल ऑर्डर के सोसाइटी के सोशल ऑर्डर में चेंज हो रहा है फंडामेंटली, उसको उसने रेवोल्यूशन बोला. नेक्स्ट, which of the following is not true about Peter Drucker? So the which of the following is not true about the Peter Drucker? So answer to this question is, I think, option D is the correct answer. Let us see the answer. That is, he coined the term smart. So let us discuss option one by one. The effective executive. Drucker wrote this classic management book in 1967. So this you have to remember this. Knowledge workers. Drucker is credited with coining the term. He coined this term in 1959. Book The Lands of Tomorrow. So remember the name of the books. MBO. He introduced the concept of the management of by objectives in his book in 1954. That is the management of the practice of management. Smart. While this
acronym is closely associated with Drucker's MBO philosophy, but the term SMART goal was actually coined by George T. Deron in 1981 article. So this term is associated with George T. Doran. Okay. So remember the name of the books here. First is Effective Executive, 1967. Second is The Landmass of Tomorrow, 1959. And the third one is The Practice of Management, 1954. All written by Drucker, Peter Drucker. So who among the following coined the term ecology? Very easy. Most frequently asked, very important. You can mark here. It is written by Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. So very important question. Next, Project MOSM is a policy linked with now the project. It is known as Project MOSM. So it is I think associated with the Indian Ocean region. It is associated with Indian Ocean region. It is an old current affair. You can remember this. No need to go into details. So the next thing is that peaceful nuclear explosion was a policy of the government. It is, I think, the Indira Gandhi government. Yes, it is Indira Gandhi. Now let us discuss a bit more about this thing, this nuclear test. The policy of the peaceful nuclear explosion refers to the India's first nuclear test, co-named Smiling Buddha Pokhran 1. Date is 18 May 1974. Location is Pokhran Test Range, Rajasthan. Prime Minister is Indira Gandhi at that time. So what is the significance? First committed nuclear weapon test by a nation outside the 5 permanent members of the United Nations Security Council. Very important. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं थे हम, फिर भी हमने ये टेस्ट किया. Indian government characterized it as a peaceful explosion to help develop indigenous nuclear technology for mining and earth moving purposes. So this is all. Next question is, para diplomacy was part of India's foreign policy under I think what is answer to this question is PM Narendra Modi. So what he say? The para diplomacy became the formal and structural pillar of the Indian foreign policy under the Prime Minister Narendra Modi. That's all. Nothing important. Nothing. Next. The UN proclaimed International Yoga Day through the Resolution 69 by 131 in which year? It is in 2014. Who has coined the term soft power? Very important question. Frequently asked. Joseph Nye. Joseph Nye Jr. of Howard University first introduced the concept in his book 1990, that is Bound to Lead, the changing nature of American power. So what is the definition of this? He defined it as the ability of a country to persuade other country to do what it wants without force or coercion. That is hard power. कि अगर तुम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो जबकि वो काम वो नहीं करना चाहता पर्सन या कोई भी है, पर फिर भी वो काम वो करे, उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर. कि ये तुम्हारी सॉफ्ट पावर है कि तुम उससे काम करवा पाओगे. सो इंस्टेड यूजिंग कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल अपील करते हैं, कल्चरल अपील करते हैं कंट्रीज इन IR. So what is the open door policy? Open door policy was associated with, I think it is associated with Deng Xiaoping. It is from China, I think. So let us discuss here. We have written Deng Xiaoping initiated the open door policy in 1978 to open China's to foreign investment and clarify its transition towards a market economy. So Deng Xiaoping is very important. 1917, and we opened our economy in 1991, and now China is the second largest economy after the US. Mikhail Gorbachev, I think he's associated with Soviet. Remember this much only, nothing much. Next is Ho Chi Minh. Just remember he's a revolutionary leader of Vietnam, nothing else. That's all. Next is Arab Spring began in which country? The answer to this question is Tunisia.
answer to this question is it started in Tunisia. So the next, the movement was sparked by the self-mobilization of Muhammad Bouazizi in December 2010, which led to the, that is, Jasmine Revolution and the eventual ousting of President Zine el Abidine Ben Ali. Protests then spread across the Middle East. I think we should use West Asia instead of Middle East and North Africa. I have made these notes from the search of the Google with the help of Google and ChatGPT. So they are made with the what we say, keeping in mind, keeping in center the West, the London. Therefore, he is also saying the West Asia. From our perspective, India's perspective, it is West Asia, not Middle East. Remember this thing, very important. The United Kingdom voted for Brexit in 2016. That's all. Next, the local bill was introduced in the parliament in, when did the local bill introduced? It is introduced in 1968. Let us discuss something more about. The bill was first introduced in the 4th Lok Sabha by the then Prime Minister Shanti Bhushan. It was came to designed to establish anti-corruption ombudsman to investigate allegation of corruption against public functionaries. What is the outcome? Although it passed in the Lok Sabha in 1969, it lapsed following the dissolution of the House before it could be passed by the Rajya Sabha. So the final passage is in the 2013. Would you believe it? A bill that come in 1969 और वो पास कब तक फाइनली हो रहा, अभी 2013 में पास हो रहा है. वो भी काफ़ी प्रोटेस्ट और करने के बाद ये सब आया. Several attempts have written here. After several subsequent attempts over the decades, Lokayukta and Lokpal bill finally passed in 2013. So remember this thing. First introduced in 68 and finally passed in 2013. Who among the following was the chairman of the advisory committee of the Constituent Assembly? Who was the Constituent Assembly? Was Vallabhbhai Patel. So the chairman of the advisory committee on the fundamental rights, minority and tribal excluded area of the Constituent Assembly was Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel led this large committee which had several subcommittees. Fundamental rights subcommittee headed by J.B. Kripalani. Fundamental Rights Subcommittee headed by J.B. Kripalani. Remember this fact. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Jawaharlal Nehru chaired the Union Power Committee and Union Constitution Committee. Sorry. Next thing. Article 169 of the Constitution makes the provision for the abolition or creation of. Article 1, that directly asking the articles. The answer to this question is State Legislative Council. What is Legislative Council in states? Let us discuss Article 169. So Article 169 of the Constitution of India provides that Parliament with power to create or abolish Legislative Council, that is Vidhan Sabha, in a state. What is the process? Parliament can do this if the Legislative Assembly of the state passes a resolution to the effect by special majority. That is the total membership of the assembly and majority of not less than two-thirds of the member present and voting. So he's saying that पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अबॉलिश कर सके और क्रिएट कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि विधानसभा होती है एक स्टेट में. वो कैसे कर सकता है? अगर जो स्टेट की विधानसभा है वो राज्यसभा है वो पास कर दे. सॉरी मैंने विधानसभा बोला, विधान परिषद, काउंसिल विधान परिषद. तो विधानसभा है स्टेट की, अगर वो पास कर दे एक रेजोल्यूशन कि वो भी एक स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी होनी चाहिए. फर्स्ट इज सेइंग दैट टोटल मेंबरशिप की, दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 1 होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेइंग दैट 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी वोटिंग होनी चाहिए, तो जाके ये पास होगा.
तो द स्टेट ऑफ लॉ क्या है? सच लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगी, इससे आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following which among the following is incorrect about the vice president of India while he discharges the functions of the president? पता which one of the following, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जब वो फंक्शंस करते हैं एज ए प्रेसिडेंट? सो लेट अस सी फर्स्ट ऑप्शन, ही विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इफ ही इज फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ही विल नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, फिर वो नहीं करेंगे ये फंक्शन ना। ही विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही, वो नहीं करेंगे। ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंसेस पे टू द चेयरपर्सन, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा उनको, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे उस समय के लिए, प्रेसिडेंट के सैलरीज और अलाउंसेस मिलेंगे। एंड ही विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो नहीं करेंगे होल्ड ऑफिस ऑफ, बिल्कुल सही बात है, नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर इज ए इज द आंसर। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बट इट इज mentioning about the correct or incorrect or what. Next question, the next question, in which case the Supreme Court of India ruled that the provision of judicial review comes under an essential feature of the Indian Constitution? Answer to this question is Minerva Mill case. So let us discuss more about it. In the Minerva Mill case, versus Union of India is 1980, Supreme Court ruled that judicial review is the basic feature or essential feature of the Constitution. But I think before that one more case in this ruling, Supreme Court struck down the clause of 42nd Amendment so that take away power of the judicial review, state that the Constitution that provides for limiting powers of the legislative must have mechanism to ensure those limits that are respected. So the Supreme Court ने यहाँ पे रूल ये किया कि उन्होंने स्टक डाउन कर दिया जो कि क्लोज दिया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो टेक वे पावर ले रहा था, छीन रहा था जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट से। सो द कोर्ट से दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेटर, तो लेजिस्लेचर की लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हद में ही रह के करेंगे जो भी वो कानून बनाएंगे, जो भी वो अमेंड करेंगे। सो नेक्स्ट, वन मोर थिंग इज हेयर इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई कब थी? सो दिस फर्दर केस स्ट्रेंथन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच वॉज अर्लियर एस्टैब्लिश्ड बाय केशवानंद भारती केस इन 1970, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती केस लैंडमार्क जजमेंट, you need to remember this and year of the केशवानंद भारती case. Check on power. The court emphasized that the parliament cannot use its amending power to enlarge its own power so as to destroy the core identity of the constitution. तो वही बोला था कि पावर्स पे चेक है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उनके पास अमेंडिंग पावर तो है पर वो अनलिमिटेड नहीं है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दें। सो ये चीज़ें हमने बोली थी केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को तुम केशवानंद भारती से कंफ्यूज मत करना क्योंकि सबसे पहले उसी में आया था ये, पर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, तो जुडिशियल रिव्यू वाली बात जो है वो मिनर्वा मिल में ही हुई है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स? So the writer of this book is Mayon Weiner. Let us discuss again. The editor of the book The Indian Paradox Essays in Indian Politics is Ashutosh Roshne. Hey, ये क्या हो गया? Let us discuss. Who edited the collection of essays written by Mayon Weiner? So the previously book is written by
Meon winner, that is also the primary author of the essay. The book was edited and compiled by Varshney. Ashutosh Varshney has just compiled and edited the whole book, but the firstly which was written by Meon. So answer is Meon winner. Next, just remember the book, The Indian Paradox. Question number 81. In the events of the dissolution of a panchayat before the completion of its term, the panchayat constituted therefore shall perform A. for the remaining period, B. for the entire 5 year, C. as decided by Gram Sabha, D. as decided by Gram Pradhan. So the answer to this question I think is option A, for the remaining period. So let us discuss. According to the article 243E of the Constitution, the panchayat constituted upon its dissolution before the expiry of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued. If the remaining remainder of the period is less than 6 months, if the period is less than 6 months, it is necessary to hold an election. अगर सीधी सी बात है, एक जो पंचायत है अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है अपनी एक्सपायरी से पहले, टर्म की जो उनकी 5 ईयर टर्म होती है उसके पहले वो हो जाती है, तो उनके फ्रेश इलेक्शन होंगे. बस एक ही एक्सेप्शन है इसमें, अगर वो 6 महीने बचे हैं, मान लो कि अभी चल रहा है जून चल रहा है और अक्टूबर में होती है, फॉरगेट दैट, मान लो कि जून चल रहा है और अभी 5 महीने बचे हैं उसको एक्सपायर होने को, मतलब 5 महीने बचे हैं उसकी एक्सपिरेशन होने को और डिज़ोल्व हो जाती है, तो फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे. अगर आज 1 साल बचा है कि अगले साल होनी है जून में, तो फिर इलेक्शन किए जाएंगे, फिर वो भी होंगे सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए जो पंचायत बनेगी. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ legislative assembly without the recommendation of governor, without the recommendation of governor हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट होता तो फिर प्रेसिडेंट हो जाता आंसर, कि नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. Yes, so I am saying that no money bill can be introduced in the legislative assembly without the what we say prior recommendation of the governor. Similarly, no money bill can be introduced in the parliament without the recommendation of the president. Just remember that. Now let us discuss some static. Article 207 subclause 1. This article specifies that a bill or amendment makes provision for any of the matters such specified in Article 199, that is money bill, shall not be introduced or moved away on the recommendation of the governor. Shall not be introduced or moved except on the recommendation of the governor. थोड़ी वकीलों वाली भाषा लिखी हुई है, लेकिन सिमिलरली इसका मतलब यही है कि कोई भी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता गवर्नर के परमिशन के बिना. रोल अभी स्पीकर का रोल क्या है? सो वाइल द गवर्नर रिकमेंड करते हैं कि गवर्नर की रिकमेंडेशन जो नीडेड होती है इंट्रोडक्शन के लिए, बट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट. और जो कि स्पीकर होते हैं, सेम केस गोज विद द पार्लियामेंट. जो स्पीकर होते हैं असेंबली के और पार्लियामेंट के, वही बताते हैं, उनकी वही सर्टिफाई करते हैं, वो उनकी फाइनल अथॉरिटी होती है. वो बताएंगे एक बिल है जो वो मनी बिल है कि नहीं है. फाइनल अथॉरिटी इज़ ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, इन केस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल, money bill cannot be introduced in the legislative council. In the states, it must be originated in the legislative assembly. Just remember this point, important. Similarly, remember that a money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha, that is the council of states. कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is not included in 5E approach in the policy analysis?
A. Effectiveness. B. Efficiency. C. Ethical consideration. D. Evidences. We will see this question with this approach. So the but 5 E's standard evaluate social policies. It is given by David E. Chambers, later Kenneth Weldel, for the social policy evaluation. So the first is effectiveness, second is efficiency, third is ethical consideration, fourth is equity, and fifth is evaluation. So now let us see which is not here, which is not mentioned here. So the evidences is not mentioned, so evidences will be our answer. Note, asking note. Next question. It is getting harder to run a constitution than to frame one. It is harder to run a constitution than to frame one. Who made this statement? ये किसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है? तो ये शब्द थे 84. आंसर टू 84 क्वेश्चन इज ऑप्शन C, that is Woodrow Wilson. So the Woodrow Wilson made this observation in his essay in 1887, The Study of Administration. Highlight that while designing a government that is framing is matter of theory and law, actual managing it, that is administration, is much more complex और practical challenge. ये इसी तरह है कि आप सोचें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जब अप्लाई करने की बारी आई तो वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा. बट विद द हेल्प ऑफ अमेंडिंग पावर वो चीज़ें टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड की गई जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और सिचुएशन के हिसाब से उसको मोल्ड किया गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बहुत सही तरीके से काम कर पा रहा है अभी इंडिया का. Who among the following is the author of the book Introduction to the Study of Law of the Constitution? And the answer to this question is A.B. Dicey. So the first published in 1885. What is the name of the book? The Introduction to the Study of the Law of the Constitution. First published in 1885. This influential work is considered a cornerstone of British constitutional working law, particularly for the exposition of the rule of law. Rule of law के लिए बहुत ही ज़्यादा influential माना जाता है. Who was A.B. Dicey? He was a British jurist. Next question. Which among the following is not included in the classification? Not included in the classification of interest group given by Gabriel Almond. So let us discuss the topic of that is classification of the interest groups by the Almond. He classified into 4 types. Gabriel Almond, he said that institutional interest group. First is institutional interest group, formally organized group located within institutions such as political parties, legislatures, armies, or churches, fraction within a political party. Next is non-associational interest group, the interest group based on the shared identity. Shared identity, race, religion, kinship, or status, which lack formal organization but act as based on the common interest. Next is the anomic interest group. This is generally spontaneous unorganized group that forms suddenly in response to the specific event, often manifesting through riots, demonstrations and protest. और सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट्स की वो स्पॉन्टेनियस की तरीके से एक ग्रुप बन जाए, उसको एनोमिक ग्रुप बोलेंगे. एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वाले स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिकली फॉर्म होते हैं, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ट्रेड यूनियन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिविक ग्रुप्स. सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं ना प्रेशर ग्रुप, वो यही होते हैं. नॉट प्रेशर ग्रुप बट इंटरेस्ट ग्रुप, वी कैन से दैट. So it is all of the interest groups, but
These are the types of the interest group. Now let us discuss which are not here. We have seen the non-institutional groups. We have seen no. We have not seen this. Non-associational groups. We have seen this. Anomic interest group. We have seen this. Associational interest group. We have also seen this. So the answer to this question is option A, non-institutional interest group. Non-institutional interest group. Next question. That is going okay. Which of the following report is published by Niti Aayog? Option is answer is very simple. National Multi-Dimensional Poverty Index in association with UNDP plus Oxford. Here it is written Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP. So let us see the other things also. Economic survey is prepared by the Economic Division of Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. Not similarly, but the unemployment rate और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा, जो कि NSO निकलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है. नेक्स्ट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे. ये कंडक्ट करवाया जाता है और पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि NSSO के अंडर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following proposed the concept of the Constitution Ombudsman in Parliament? We have already seen that Shakti Bhushan. No Shakti Bhushan. No. I am wrong. Sorry. It is not Shakti Bhushan. It is answer B. It is answer B. Ashok Kumar Sen. He introduced the idea in the parliament in but he have seen जो हमने ऊपर देखा वो क्या था. एक मिनट रुक जाओ. Let me check. फर्स्ट बिल पास. अच्छा, फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इंट्रोड्यूस किसने किया था? शांति भूषण जी ने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, रिमेंबर दैट. अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी ना. जस्ट रिमेंबर दैट. द बिल इज इंट्रोड्यूस इन 19 फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया इन पार्लियामेंट बाय अशोक कुमार सेन and Dr. L.M. Singhvi. He is credited to coin the term Lokpal and Lokayukta during the parliamentary debate in 1963. And Administrative Reform Commission, that is ARC, the first ARC headed by Morarji Desai in 1966, formally recommended the setting up of these two independent authorities to redress citizens' grievances. जो सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस थे उनको रिड्रेस करने के लिए मोरारजी देसाई ने, जो कि हेड कर रहे थे ARC, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन को, उन्होंने जो बोल दिया था कि ये होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी? वी विल रीड वन बाय वन. ओके. So wealthy countries' subsidies and trade barriers make it difficult for developing countries to make advantage of the potential of globalization for advancing food security. B option. World Trade Organization rules do not cover agriculture, so globalization really has no bearing on food security. ये तो बिल्कुल ही गलत है. इतना तो पता होगा, WTO है जो उन पे रूल्स होते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं. सुपर मार्केट आर सो फार द ओनली वे इन विच फूड एंड एग्रीकल्चर हैव एक्सपीरियंस्ड ग्लोबलाइजेशन. जो बोला सुपर मार्केट है, जो मैं भी थोड़ी अटपटी सी स्टेटमेंट लग रही है. देखते हैं, मैं इसके आगे ऐसे लिख दूँगा. डेवलपिंग कंट्री नीड्स टू क्रिएट पब्लिकली ओन्ड फूड रिजर्व्स इन ऑर्डर टू रियलाइज द पोटेंशियल बेनिफिट. अच्छा, डेवलपिंग कंट्री को फूड रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे पब्लिकली ओन. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. जैसे लग रहा है ये सब एडवर्टाइज स्टेटमेंट्स लग रही हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ इट? जो वेल्थी कंट्रीज़ हैं वो सब्सिडी देंगी और ट्रेड बैरियर्स लगाएंगी, जिनके लिए तो ऐसे ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री के लिए कि वो एडवांटेज ले पाएँ पोटेंशियल का. ग्लोबलाइजेशन ऑन एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी. एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कुछ चीज़ें. इट्स सेइंग दैट द वेल्थी नेशंस ऑफन प्रोवाइड हैवी सब्सिडी देते हैं अपने फार्मर्स को और इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेड बैरियर्स.
This makes it difficult for the farmers in developing countries to compete in the global market, thereby hindering their ability to improve local food security through trade. वही बात कि वो सब्सिडीज़ देते हैं और ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं अपनी फार्मर्स को। एक तो सब्सिडी दे रहे हैं जो वेल्थी नेशंस हैं, ऊपर से ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स के लिए कि वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करें, जिनकी वजह से उनकी फूड की जो सिक्योरिटी है वो ट्रेड के थ्रू ही करनी, जिसकी वजह से वो हिंडर कर रहे हैं उनकी एबिलिटी टू इम्प्रूव लोकल फूड सिक्योरिटी थ्रू ट्रेड, और वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। अदर ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी सीन आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the government 2.0? I think the answer to this question is option B. It is the second term. Let us read it. It's NDA in its second term. It refers to the government policy that aim to harness interactive internet tool to create an open source communicating platform. It offers to metaverse virtual reality world. It refers to the government of nations emerged after World War II. थोड़ी अटपटी सी लग रही है मेरे को, तो ये लग रहा था कि ये ना हो कहीं, लेकिन आंसर इज बी। लेट अस डिस्कस। Government 2.0 refers to the use of technology, specifically Web 2.0, social media and interactive internet tools to make government operations more transparent, collaborative and participatory. Include open data. Government making data available for public use. Next is the collaboration. Using open source platform and crowdsourcing to solve public problems. Okay. Interactivities. Shifting from one-way broadcasting of information to a two-way dialogue with citizens. इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन डाटा कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए और क्राउड सोर्सिंग की जाए। थर्ड बोल रहे हैं इंटरेक्टिविटी की जाए, वन वे ब्रॉडबैंड से टू वे कम्युनिकेशन जो है की जाए, सिटीजन से भी बात की जाए, उनके ग्रीवेंस भी सुने जाएँ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड गवर्नमेंट 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Answer to this question is option. First of all is Sexual Politics is by Kate Millett, absolutely correct. Second, Sex by Shulamit Firestone, I think it is not correct. This is written by someone else. Feminine Mystique, Brandy Freden, absolutely correct. Fourth is Dialectic of Sex, Nicholson, it is incorrect. It is not written by this person. Answer to this question is option C, 1 and A and C only. Let us discuss the options. So we have discussed by this in year. Remember the year. Second wave. Remember this only. Second sex. It is incorrect because second sex is written by Samuel. It is incorrect. Just remember it is written by Samuel the Webior, and Sulam Smith wrote the Dialectic of Sex. Important. Next is the Feminine Mystique, Brandy Freden in 1963, and it also the second wave of American feminism. Last is the Dialectic of Sex. It is written by Shulamit Firestone. We have already seen. So not written by this person. This is written by Shulamit, and Linda Nicholson is write the book that is Gender and History. So from this you can have very much information. Just you have need to mug up the things. तुम्हें रटनी ही पड़ेंगी, ये रोट लर्निंग का कुछ नहीं है, पेपर में रोट पूछे जा रहे हैं, तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ओके, फर्स्ट ए citizen is known by the rights he is allowed to exercise. Second,
A person living in a state territory is a citizen of the state. C. Citizen can be granted through process of naturalization. Correct. If one is born in the territory of state, he will be recognized as a citizen. Correct. So C and D is correct according to. So C and D not. This is not my answer. Not C and D not my answer. So I come in two options. So now either B is correct or A is correct. So let us see. A citizen is known by the rights he is allowed to exercise. सिटीजन अपने राइट के द्वारा जाना जाता है जो वो एक्सरसाइज कर सके. अच्छा, दूसरे देखते हैं. सिटीजन पर्सन लिविंग इन द स्टेट टेरिटरी इज सिटीजन. एक पर्सन जो स्टेट टेरिटरी में रह रहा है वो सिटीजन है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इस ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाउ बी इज करेक्ट? लेट अस डिस्कस. A person living in the state territory of a citizen is incorrect. Simply residing in a territory does not make someone a state. यार सीधी सी बात है, अगर हमारा इंडियन कोई बाहर गया हो, ब्रॉड गया हो, वहाँ पे काम कर रहा हो, वहाँ पे वो रिसाइड तो कर रहा है, वहाँ पे तो रह तो रहा है, उसकी टेरिटरी वो कंट्री की टेरिटरी में वो, पर वहाँ का सिटीजन थोड़ा हो गया वो. इफ़ ए पर्सन इज़ रिसाइडिंग इन एनी पर्टिकुलर प्लेस फॉर मोर देन 6 months, he shall be citizen, he or she shall be the citizen of that किसी स्टेट. मान लो अगर आप अभी किसी स्टेट में रह रहे हो, आप दिल्ली चले गए या बॉम्बे चले गए और आप बॉम्बे में रहने लगे और 6 महीने तक आप वहीं रहे, तो आप रेजिडेंट्स हो जाएंगे वहाँ के, ना कि सिटीजन. सिटीजन तो आप इंडियन के ही रहेंगे. सो रिमेंबर दिस थिंग. दे कुड बी एन एलियन टूरिस्ट. हाँ, लुक एट दिस, एलियन टूरिस्ट और द कंटेम्प्रेरी रेजिडेंट्स. Citizenship requires formal legal recognition. So just remember that. एक मिनट. He is saying that a person lives in a state territory is a citizen. State territory, ऐसे में कोई फॉरेनर यहाँ रहेगा तो वो तो सिटीजन नहीं कहलाएगा ना. Just keep it at hold this question. I will see this question. Next question. Who among the following instrument of direct democracy are functional in Switzerland? I think the answer to this question is Jens Demerio. Sorry for my pronunciation. Referendum, initiative, and recall. Choose the most appropriate option from the given below. Options given below. So 1, 2, 3. I think the answer to the question is all D option. A, B, C, D. So let us discuss one by one. I don't know what is, you can pronounce as you want. It is a traditional form of direct democracy, open air assembly, still practiced in 2 Swiss cantons. Okay, so बस इतना रुपये की ये एक ट्रेडिशन है वहाँ का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, अभी प्रैक्टिस होता है. नेक्स्ट इज रेफरेंडम. इट इज़ सिटीजन कैन चैलेंज लॉ बाय पास्ड बाय पार्लियामेंट. सिटीजन कैन चैलेंज लॉ. सिटीजन चैलेंज कर सकते हैं कानून को जो पास की जाए पार्लियामेंट द्वारा. इट इज़ अ कोर पिलर ऑफ द स्विस फेडरल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशिएटिव. सिटीजन जो है वो कर सकते हैं प्रोसेस चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय गैदरिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्नेचर. मीन इफ़ आई वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाना चाहता हूँ तो मैं सिटीजन से होंगे, मैं उनके सिग्नेचर लाऊंगा स्पेसिफिक नंबर के और मैं प्रपोज करूँगा कि चेंज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में. बट एन ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, डायरेक्ट इनिशिएटिव. फोर्थ इज द recall. While common in some other countries like part of the US, the power to remove an elected official from office before their terms expires is not an instrument of direct democracy. It is written wrong, but it is written wrong. It is the direct. It is the what we say initiative of the direct democracy. Just remember. Next question. The Saptang theory. The Saptang theory of state comprises A. स्वामी अमात्य. B. जनपद राष्ट्रीय और मित्र. C. दुर्ग कोश दंड. D. अध्यक्ष एंड
calm. I am calm. So the answer to this question is 1 Swami. 2 A should be there. Janpada and Rashtra B should be there. So answer is this. No, this is not answer. This or this. We come to do. See, Durg, Kosh, Dand. Here also, here also. This is not the answer. So D is not there. So we come to the answer. That is option A, B and C. So let us discuss what are the 7 elements of the Saptang theory of the Kautilya. First is Swami, that is a king or ruler. Amatya, that is a minister. Janpad or Rashtra, that is people or the territory. Mitra, that is ally, friend. Durg mean fort. Kosh mean territory. Dand mean army or force. So the D is incorrect because Adhyaksha means the department of head and Ayamukam means source of revenues, are important administrative terms in the Arthashastra, but they are not characterized as the primary 7 limb of the Saptang theory. Okay, Saptang theory. Next question. Which of the following statements are incorrect with regard to the Jayaprakash Narayan? Okay, which is incorrect. It is written incorrect. So the first, he believed in guarantee of the full individual and civil liberty. Absolutely correct. He believed in guarantee of the full individual and civil. Second, he believed in the cooperative form run by the panchayat. Absolutely. वो यही चाहते थे कि पंचायत जो है वो कोऑपरेटिव को रन करें. सी, a true nationalist desire to build on an old foundation. This is not correct. वो ऐसे नहीं मानते थे. He recognized that the Swaraj was not only a right but a dharma. नहीं, ये गांधी मानते थे, गांधी की नहीं मानते थे. ये जयप्रकाश नारायण की बात ये नहीं थी. ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है. सो द ऑप्शन जिसमें हमें ये दिख रहे हैं, ऑप्शन जो हम जिसमें हमें इनकरेक्ट दिख रहे हैं, तो इनकरेक्ट C or D option this. So this is correct. I have given the explanation, you can go through it. I will share this PDF in link in the description. Okay, you can download from there. So next, 96th question. While justifying the slavery, Aristotle says, A. From the hour of the birth, some men are marked out of subjection and others for rule. B. That a man of capacity, foresight, self-reliance, and the life of virtue are intended by nature to work with their mind. This seems correct. virtue लिख दिया तो seems correct. सही लग रहा. C. That they have capacity to discharge intelligence their own duties only. कि उनके पास कैपेसिटी है कि वो डिस्चार्ज करें इंटेलिजेंटली अपनी ड्यूटीज़. सो ये भी ठीक लग रहा है. नेक्स्ट, दैट दे आर मशीन्स विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीज़न. एनी कैपेसिटी, विदाउट एनी कैपेसिटी, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है. तो ये तो मैं गलत मान के चलता हूँ इसको. सो आप डी को हटा दें. ये गया, ये गया, ये भी गया. लीजिए आंसर आ गया. करेक्ट पूछा तो ये आंसर एक बार देख लेते हैं. डी इज इनकरेक्ट because Aristotle views slaves as living tools or animate property, but he acknowledged that they possessed little degree of human reason. This is the thing. Enough to understand master. अगर एक स्लेव भी है उसके पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए जो उसको मास्टर उसको बोल रहा है वो काम तो करे वो, rather than being mindless machine entirely devoted of reason. So this is it. Next question. Which among the following ideas are part of cultural revolution? Children are the master of new society. B. Only the poor peasants can and must be basic force to be relied upon the land reforms. C. Under feudal domination, marriage is barbaric and inhuman institution. Okay. D. The
women are reserved for homemaking. Cultural revolution. I don't know much about this revolution, so I'll refer to the analysis, then we come to the question again. So the answer to this question is, let's see, option D is not correct. As you see here, D is incorrect. One of the most famous slogan of the era, that women hold up half the sky. The movement actively engaged women to learn domestic sphere, to leave women to leave the domestic sphere, enjoying the workforce and political struggles. So if we remove the D option, this is gone, and this is gone. Just putting the more appropriate answer. So A, B, C are the correct answer. Okay, so this is it. You can read this by yourself. Okay, let me think. During the Cultural Revolution, Maoist ideology emphasized the role of the youth as the vanguard of the revolution to overthrow the four olds. So from here I can say this is belong to the vanguard of Russian Revolution. Just read it. I don't know. Let's just read it more from the web. Next is the Maoist heavily prioritized the peasants as the revolutionary class, especially for concerning land reforms and rulers restructuring. ओके वो रूलर रिस्ट्रक्चरिंग जो माओइस्ट हैवली वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे पीजेंट्री को रेवोल्यूशनरी क्लास की तरह, और वो लैंड रिफॉर्म्स पे स्पेशली उनका कंसर्न था, और रूलर जो रिस्ट्रक्चर थी, जो ग्रामीण एरिया था, उसको वो रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे थे. सी द रेवोल्यूशन sought to dismantle traditionally feudal family structure, and the marriage law of 1950s labeled traditional marriages as barbaric and feudal. बारबेरिक मतलब बर्बर और फ्यूडल मतलब सामंतवाद की तरह को देखा जाता. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे जो है ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एक बार इनको ज़रूर गूगल करके पढ़ें. Consider the following statement regarding the John Locke theory of justice. John Locke theory of justice. Justice is the first virtue of social institution. I think it is correct. It is the first virtue. Justice is the first virtue of the state institution. For the state institution, I am doubt. I don't know. See, in a state, the right secured by justice are not subject of political bargaining. In a just society, the rights secured by the justice are not subject to political bargaining. जिस सोसाइटी में जस्टिस ही वो पॉलिटिकल बार्गेन की तरह हो गया, वो फिर जस्ट सोसाइटी नहीं रही, वहाँ पे जस्टिस खत्म. तो सी ऑप्शन को मैं गलत मानूंगा. अगर मैं सी को गलत मान लेता हूँ तो आंसर मेरा आएगा? आई थिंक नहीं आएगा. सी सही है. सी कैसे सही है, एक बार फिर से देखते हैं. इट इज़ इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्टेड टू. कहते हैं कि पॉलिटिकल बार्गेन नहीं होगा. मैंने इसको दूसरी तरह देखा कि मैंने सोचा होगा, नहीं होगा, नॉट लिखा है. तो ये सोसाइटी में जस्टिस की पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो गई तो वो जस्ट नहीं रही, तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि नहीं होगा इसमें. सो ए 1 और 3 आ गई हमारे ऑप्शन में. 1 और 3 हमारे एक इसमें और एक इसमें. तो दूसरी मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग. देखते हैं. इन ए सोशल सोसाइटी द राइट In a just society, the rights secured by justice are not subject to social obligation. कहता है जो जस्टिस है वो नॉट सब्जेक्ट टू सोशल ओब्लिगेशन. वो सोशल ओब्लिगेशन नहीं है उस पर, जस्टिस पे. तो ये तो गलत बात है. अगर सोशली ओब्लिगेशन ही नहीं है तो फिर जस्ट कैसे रही वो सोसाइटी. सो डी को मैं गलत मान के चलूँगा. तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की वो है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ द वर्क ऑफ द जॉन रॉल्स. Next we have discussed. Next question. Type of policy proposed by Theodore J. Loewy. A. Distributive, redistributive. B. Regulatory, constituent. C. Subsequentive, procedural. D. Distributive, substantive. E. Constituent and procedural. Now choose the correct options from the above. The answer to this question is A is correct and B is correct. So option A is correct. Let us discuss the classic topology of public policy of the
Theodore J. Loewy. So first is distributive. He said distributive. He divided it into 4 categories. So first is distributive, policies that provide services or benefit to the specific group, that is distributed. Second is redistributive, policies that shift resources from one group to other, that is redistributive. Third, regulatory, policies that limit the discretion of individual and agencies or otherwise compel certain behavior, that is regulatory. Fourth is constituent, policies that create or modify executive agencies or establish rule for governmental processes. थोड़ा पानी पी लेता हूँ 1 मिनट. So last is constituent, policies that create or modify executive agencies or establish rule for governmental processes, that is constituent. Okay. And one more thing, they represent the core of his theory, that is the power of arena thesis in 1964. Just remember this thing, a fact to remember. If next time he may ask for this thesis, arenas of power 1964, that is Theodore J. Loewy. Next, which of the following book are authored by Max Weber? So the book that are authored by Max Weber are option. Let us go here. Book A, that is the Theory of Social and Economic Organization. It is a famous English translation of the Max Weber work. Secondly, The Economy and Society, widely considered Weber magnum opus, published posthumously as Whitcraft and Wirtschaft, Shaft and Ulysses Shaft. Other titles, The Theories of Administration of the State and The Elements of Administration, are not authored by Weber. It is written by L. Urwick. So option A and C are the books of Max Weber. So option D is correct answer. So next question 101. Which of the following are not a characteristic of the modernization process according to Huntington? Okay, नहीं है, कहते हैं not a characteristic. Okay, let us read it one by one. It is a revolutionary process. Okay, it is a reversal process. Modernization is a reversal process. Okay, we will see. It is a homogenizing process. Okay, it is a complex process. Let us see one by one. The Samuel P. Huntington modernization. According to Samuel P. Huntington, modernization is characterized as an irreversible process. So irreversible is incorrect. This is not correct. B is gone. This option gone. This option gone. We remaining with 2 options. Next is, therefore the statement reversal is incorrect. Okay. Now the characteristic of modernization of the Samuel P. Huntington. First is revolutionary. Okay. It involves the radical shift from the traditional to modern patterns. B is second is complex. It involves changes in almost every dimension of social life, that is economic, cultural and political. I am telling it is important. Samuel P. Huntington pe we have seen 2 questions in this paper only, so make a note of it. Homogenizing, it tends towards the convergence of societies towards a common model, कि वो common model की तरह society को homogenize कर देता है. Next is irreversible, we have seen. So these are the things. So let us see. So he say revolutionary process, yes. Homogenizing process, yes. Complex process, he is saying it is a complex process but is not mentioned in here. So we'll go with the A only. We go with the. So it is not okay. Again मैं भूल गया था कि उसने नोट पूछा है. So not option B is only. So ये मैंने वही मिटा दिया. So ये तो आंसर बड़ा ईजिली आया था, मेरे को पता है वो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आंसर आ गया. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना.
मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ और मेरे को क्वेश्चन गलत, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे दिमाग में वो ध्यान नहीं रह रहा। सो दिस थिंग हैपन्स इन एग्जामिनेशन, तो प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग characterizes rational choice institutionalism as a new institution approach in comparative politics? चलिए पहले रैशनल चॉइसेस इन इंस्टीट्यूशनलिज्म का एनालिसिस करते हैं। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है पॉलिटिकल साइंस में जो एक्सप्लेन करता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे शेप करते हैं बिहेवियर ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज सेइंग इंटरेस्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट मोटिवेशन, ये करेक्ट है। ये कहता कि जो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये अज्यूम करता है कि पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टर्स आर रैशनल इंडिविजुअल्स व्हिच सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट और प्रीफरेंसेस, कि वो अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं उसको मैक्सिमाइज करते हैं। सेकंड ये बोलता है कि रेजोल्यूशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन डिलेमा, ये भी करेक्ट है कि एक कोर फोकस जो होता है इंस्टीट्यूशन का वो होता है कि टू डिज़ाइन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स लाइक फ्री राइडर इफेक्ट ना। अब ये फ्री राइडर क्या होता है ये भी देखेंगे। हेल्प एक्टर्स अचीव म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम दैट कुडंट रीच इंडिविजुअली। फ्री राइडर एक ऐसा वो इफेक्ट होता है जो यानी कि जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने, फॉर एग्जांपल देने पड़ते। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर एक पार्क बनाया है और वो पार्क को हर कोई वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर पा रहा है और वहाँ पे सैर कर पा रहा है, तो वो एक फ्री राइडर डायलेमा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने टैक्स पेयर जो होंगे उन्होंने टैक्स दिया, उनके टैक्स से वो बना होगा, लेकिन वो सोसाइटी के जो सभी वर्ग हैं उनको वो कवर कर रहा है, सभी वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, अपनी वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से इसको माना जाता है। ये एक एग्जांपल थी, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। थर्ड इज़ कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। सो द थर्ड इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट. So if we go to the options, C is not correct. We come to the two options. Okay. Next, this characteristic belong to sociological institutions, which argues that interests are shaped by social norms and culture. Social norms and culture. RCI views interest as fixed and exogenous. ये fixed and exogenous की तरह बोलता है, ये बोलता है कि कल्चर कंस्ट्रक्शन नहीं होती इंटरेस्ट की। ओके। डिडक्शन अप्रोच की बात करें तो ये करेक्ट है। आरसीआई टिपिकली स्टार्ट करते हैं जनरल थ्योरेटिकल अजम्पशन से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और डिड्यूस करते हैं कि इंडिविजुअल कैन विल एक्ट विद इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेन। वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रेन में ही जो है वो अपना एक्ट कर सकता है, अपना काम कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी इज़ करेक्ट, 1 is correct, 2 is correct. So 1, 2 and D, that is option B is correct. So let's go to the next question. Which of the following is correctly matched? A is Doklam trijunction. Doklam is a trijunction, absolutely correct. It is a trijunction between India, China and Sikkim. Not Sikkim, Bhutan I think. Yes, India, China and Bhutan. Let us see here. Yes, trijunction between India, China and Bhutan. Next, Easter Day terror attack, Sri Lanka. I think it is also correct. Sri Lanka, yes, suicide bombing in the Sri Lanka Easter Day in 2019. Ukraine, NATO is not a member of Ukraine. इसी पे तो यूक्रेन और रशिया की जो वार है इसी पे तो हो रही है. This is the reason, because Russia don't want Ukraine to join NATO. So if we remove the C is not correct. A is correct. A here. Okay. B is also correct. A and B. So B. D is GCC. Iraq is not a member of GCC. Okay. So in this way B is the correct answer. Let us see the members of GCC. GCC consists of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE.
these countries are the part, but we can say these countries surrounding the Persian Gulf. Okay, so NATO, not Ukraine is not a member of NATO. Okay, next, which of the following is correctly matched? Cold War, bipolar, absolutely bipolarity, we have seen this. Berlin crisis, I think this is correct. Let's see. Cuban Missile Crisis, this is correct. Marshall Plan, I don't know, so we need to correct. I have already come to the answer because I know these two. A and C are correct, so A and C are correct. Correct. Berlin crisis, when there is a multiple Berlin crisis, the major one occurs in 1948, here written 55, so it is incorrect. That is Berlin blockade, and in 1961 Berlin Wall. 1951 year of the Warsaw Pact was signed. So Warsaw Pact इस साल में साइन हुआ था, वो 1955 का, जबकि जो बर्लिन ब्लॉकेड लगी वो 1948 में हुई, और जो बर्लिन वॉल बनाई गई वो 1961 में बनाई गई. सो दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड. नेक्स्ट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये एक कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन थी कोल्ड वार एरा में, जिसको कहा जाता है कि इसी टाइम पे न्यूक्लियर वेपन चलने ही वाले थे, जस्ट वो रहेगी. इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, कि जब 1962 आया तो क्यूबा जो कंट्री थी, क्यूबा जो कि यूएस के नीचे है. इफ़ यू सी द मैप यू कैन सी क्यूबा जस्ट बिलो द यूएसए. तो रशिया ने, यूएसएसआर ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन थे वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे. सो जब यूएस को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया. तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि जस्ट वार होने ही वाली है, और फिर भी वो सिचुएशन बड़ी मुश्किल से काम की गई. तो उसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्राइसिस अभी आएगी, अभी चली पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन पर बच गए. नेक्स्ट इज द मार्शल प्लान, जापान. इट इज़ इनकरेक्ट. मार्शल प्लान वाज द अमेरिकन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू यूरोपियन powers after World War II. It is very important यार, how can I forget it? Remember this thing, Marshall Plan. And इसके बाद ही जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो बने थे इसके बाद, कौन से थे? दैट इज़ वर्ल्ड बैंक और IMF, जिन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन लोन दिए थे. रिकन्स्ट्रक्शन के लोन दिए थे. रिकन्स्ट्रक्शन लोन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ए, हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, इंडिया नेपाल. बी, बेसिक ग्रुप चाइना. सी, ग्रुप ऑफ 77 USA. डी, बिम्स्टिक पाकिस्तान. इतना तो मेरे को पता है कि बिम्स्टिक में पाकिस्तान नहीं है. बिम्स्टिक बना है ही इसलिए गया था कि उसमें पाकिस्तान की एंट्री नहीं थी. और सार्क की बात करें तो सार्क में पाकिस्तान था, बिम्स्टिक में नहीं था. नहीं है, मतलब सार्क में है, बिम्स्टिक में नहीं है. सो डी तो मैं गलत मान लूँगा, और डी के ही गलत मानते ही मेरा आंसर आ गया. चलिए एक बार देख लेते हैं. सो हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी ये करेक्ट है, इंडिया नेपाल के बीच में हुई थी. ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिनकी जो कि पावर जैसे कि पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जो कि वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट द्वारा बनाया गया, ये भी है. बेसिक चाइना की बात कीजिए, ये भी करेक्ट है. बेसिक चाइना इंडिया, बेसिक बस याद रख लेना कि जो बेसिक ग्रुप है चाइना, उसमें चाइना है. तो उसमें कौन कौन से हैं, एक ये याद रख लेंगे. 4 लार्ज और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं. साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, इंडिया है और चाइना है. बस यही याद रखने हैं. इसमें रशिया नहीं है इसमें. दे फॉर्म दिस ब्रिक टू एक्ट जॉइंटली टू क्लाइमेट चेंज समिट. क्लाइमेट चेंज की समिट की कारण इसको बनाया गया था, क्योंकि ये काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सभी, और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं जो इमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए बनाया होगा. ऐसे ही कनेक्शन बनते हैं, ऐसे ही सोचोगे तो ऐसे ही कनेक्शन बनेंगे कि वो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, वो मिशन ज़्यादा करते होंगे क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, इसलिए ये चीज़ें उन्होंने क्लाइमेट चेंज करने के लिए बनाई है. तो ऐसे ही लिंकेज बनाने पड़ेंगे तुम्हें. पेपर में हर क्वेश्चन तुमको नहीं आता होगा, लेकिन तुम्हें इंटरलिंकिंग करके ही करना पड़ेगा. एलिमिनेशन तुम्हें लगानी ही पड़ेगी. सो द नेक्स्ट इज़ डी, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 77 USA. दिस इज़ इनकरेक्ट.
that is group G77 is coalition of developing countries. So the US कहाँ कैसे आ गया इसमें? US is developed countries and not a member. Just remember that. Stick already seen. इसकी कंट्रीज़ देख लेते हैं. इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी पर सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इंक्लूड करता है कंट्रीज़ को डिपेंडेंट ऑन द बे ऑफ बंगाल. इसमें बंगाल, बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें आ जाता है. पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. Which of the following is correctly matched? War on terrorism USA. मैरीटाइम सिल्क रूट. तुम्हें पता है जो मैरीटाइम सिल्क रूट है ये इंडिया का नहीं, ये चाइना का था. अगर तुम्हें इतना भी पता है तो तुम काफ़ी कुछ सोल्व कर पाओगे. बी को गलत मान लो तो ये ऑप्शन तो गया. सो ए तो सही है क्योंकि वॉर ऑन टेररिज्म इन्होंने किया था जब 9/11 पे. और सी ऑप्शन देखो एक बार, विक्टर वेंचू नहीं पता, रशियन नाम लग रहा नहीं पता, यूएसएसआर का हो सकता है, पता नहीं. लाइन ऑफ कंट्रोल, ये देखो लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना. भाई ये पाकिस्तान के साथ नहीं थी हमारी, चाइना के साथ तो LAC थी. सो ये भी गलत. तो देखो अभी डी भी गलत है, ये गया. सी इज़ करेक्ट, सी सही है, आंसर आ गया. अब जरूरत है इसको पढ़ने की, लेकिन देख लो एक बार. सो देखो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म इन्होंने किया था. इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यूनाइटेड लॉन्च्ड बाय US गवर्नमेंट फॉलोइंग द अटैक ऑन 9/11 अटैक, दैट इज़ September 11 अटैक जो उनके WTO के ऑफिस पे हुआ था. उसके बाद मेरे टाइम इंडिया का नहीं है, चाइना का है. ये मैंने पहले बता दिया. जो कि कंपोनेंट इनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी चाइना द्वारा अडोप्ट की गई है, जो कि BRI बोलते हैं इसको. नेक्स्ट इन द विक्टर घानू कोच, मेरे को प्रोनाउंस भी नहीं करने आ रहा, आप देख लेना. ये करेक्ट है. ये फॉर्मल पॉलिटिशियन थे, 4th प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के 2010 तक. और ये रिमूव किए गए फ्रॉम द ऑफिस 2014 में, जो कि मिडेन रेवोल्यूशन द्वारा इनको रिमूव किया गया. नेक्स्ट डी इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल. ये इनकरेक्ट है. लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी पाकिस्तान के साथ है. इंडियन पाकिस्तानी जो कंट्रोल पार्ट है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल. और जो अभी जो है वो हम जैसे कि मैंने पहले बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC बोलते हैं, वो हमारे इंडिया चाइना के बॉर्डर में. सो नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सार्क काठमांडू, ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसीज नरसिम्हा राव. ओके, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कोलालमपुर. आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट. मेरे को ये कुछ याद नहीं है हमें. मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे जाना पसंद करूँगा, पर ध्यान से देखें तो इसमें देख लेते हैं इधर जाके, ऐसे क्या ही करना. तो सार्क है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है. ठीक है. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, याद रखना. जो ये पॉलिसी है ये नरसिम्हा राव द्वारा नहीं, ये पी नरसिम्हा राव द्वारा एक्ट ईस्ट नहीं लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी. रिमेंबर दिस थिंग. जो हाँ ये तो मेरे को याद आ रहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है इनके द्वारा लाई गई थी, जो एक प्रोएक्टिव वर्जन है लुक ईस्ट पॉलिसी का. सिमिलरली जो हम नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई. बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं. जो इमीडिएट नेबर हैं हमारे, उनके लिए हम लाए थे. जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कोलालमपुर में है, इसकी ये इनकरेक्ट है. ये इसका बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है ये हेडक्वार्टर, ना कि कोलालमपुर मलेशिया में. ओके नेक्स्ट. सो देखें तो इस सार्क ये सही है, हमारा काठमांडू में है. ये PM मोदी द्वारा, ये गलत है. ये PM मोदी द्वारा लाई गई, ये भी सही है. और ये कोलालमपुर में ना होकर बीजिंग में, ये गलत. A and C आर द करेक्ट आंसर. से इसने का कुछ है करेक्टली मैच कौन से हैं, तो A and C दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सो लेट अस सी. सिविल लाइबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. इंडिया
US 10-year framework agreement for defense cooperation 2015, Defense Technology and Trade Initiative 2020, basic, that is BE, BECA. This is BECA, that is basic exchange of cooperation. ये अभी इसने साल पूछ लिए हैं, तो ये बस रटने वाला ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा देख लेते हैं इसको। 2010 में आया था सिविल न्यूक्लियर, जो हमारी आई थी 2010 में, बिल्कुल सही जवाब, सही ऑप्शन है ये कि एक्ट वाज एनेक्टेड, एक्ट आया था 2010 में, साथ में तो 1 to 3 एग्रीमेंट किया गया था। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर न्यूक्लियर डैमेज। सेकंड, इंडिया US 10-year फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन 2005, दिस इज़ आल्सो करेक्ट। 2005 में किया गया था इंडिया US के, हाँ 2005 में था, 7 में नहीं, डिफेंस कॉपरेशन के लिए। नेक्स्ट, डिफेंस जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव है, ये 2020 में नहीं 2012 में किया गया था। बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट जो है द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट है बेका, 2019 में नहीं लाया गया, ये 2020 में लाया गया था। सो डी इज़ इनकरेक्ट एंड सी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी इज़ करेक्ट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तुम देख रहे हो मैंने सीधे सीधे आंसर नहीं लिखे, ताकि तुम्हारा आंसर पे सीधा ध्यान ना जाए, तुम पढ़ो समझो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर तुम्हारा आंसर निकले। मैंने इस तरीके से ये नोट्स बनाए हैं ताकि तुम भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि पेपर में तुम्हें एलिमिनेशन लगानी ही पड़ेगी, ऐसे तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉज्ड द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होती है? कोऑपरेशन बिटवीन द टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट इज़ अ कोऑपरेशन. So the cooperation, that is union state cooperating in economic matters, you can say that. So next is union state legislative relations. I don't know, compulsion of the developmental finance. D is the dynamics of the electoral politics. So let us see what we have in the explanation. So union state cooperation in economic affairs, everything is written here. So what is the answer? So let us see. यूनियन स्टेट कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक मैटर्स, हाँ ये एक पिलर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, तो बस ये तो है ही, जैसे कि GST नीति आयोग ये करते हैं इसमें। दूसरा बोलता है कि रिलेशंस की बात करें, तो ये टॉप डाउन हायरार्की है, आर्टिकल 245 to 255 जो है ये करते हैं, तो ये भी एक करता है। नेक्स्ट इज इन द कंपल्शन ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंस, तो कंपल्शन इम्प्लाइज फोर्स और रिजिड टॉप डाउन अप्रोच विच कॉन्ट्राडिक्ट द वॉलंटरी कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट नेवरदलेस इट इज़ द फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. नेक्स्ट, the dynamic, this is I think incorrect, dynamic of the electoral politics, the rise of the regional parties and coalition government has forced the union government to negotiate and what we say cooperate more closely with state leadership, driving towards more cooperative. Don't you think it will lead to the competitive federalism as well? Competitive federalism and confrontational federalism also. Just come to the question once and you just read the question. स्टेट, मान लो कि जो स्टेट है वो चाहता हो, अगर एक बॉर्डर स्टेट है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब और राजस्थान, वो चाहते हैं कि भाई जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो हमें दी जाए, बॉर्डर की सिक्योरिटी, बट वो एक नेशनल इशू है, तो वो स्टेट उस पर ना बनाएगी, सेंटर नहीं बनाएगी, सॉरी स्टेट नहीं बनाएगी, यूनियन बनाएगी, उस पर पार्लियामेंट बनाएगी, तो उनकी तो वो चलेगी, तो यहाँ पे कोऑपरेशन कैसा होगा? तो ये तो मैं नहीं मानूंगा इसको कि ये लेजिस्लेटिव रिलेशन बनते हैं। तो बी को हटाओ भाई, बी गया, ये गया, ये गया, और डी की बात आओ, बोलते हैं डायनेमिक इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डायनेमिक
जैसे कि हमने देखा कि रीजनल जो पार्टीज़ हैं वो आएंगी तो वो कोऑपरेशन कहाँ करेंगी, वो तो कन्फ्रंट्रेशन करेंगी ना, एक दूसरे से लड़ेंगी वो पावर में आने के लिए, आरोप लगाएंगी एक दूसरे पे पार्टीज़ पे। तो डी भी मैं गलत मानूंगा, तो ऑप्शन ए के साथ मैं जाना चाहूँगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें पेपर में, अगर नहीं आता होगा इसमें भी कुछ नहीं, इवन एक्सप्लेनेशन में मैंने देखा नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया था इसको, तो इसको आप ज़्यादा कंसिडर ना ही करें इस वाले में। सो इसको ना ही कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट, which of the following are related to electoral reforms in India? This is important one, electoral reforms in India, and the correct answer to this question, I think we will come to that sorry. Dinesh Goswami committee, yes. Indrajit Gupta committee, yes. Tarkunde committee, yes. Santhanan committee, no, it is not. So 1, 2, 3, C is the option. Let us discuss. So the electoral reform committee, the Dinesh Goswami committee, focus on many aspects electoral reforms, including checking misuse of official machinery and misuse of monetary, there is money power, misuse of money power in elections. Indrajit Gupta committee primarily deal with the state funding of elections to ensure level playing field for candidates regardless of their financial resources. Tarkonde 1974. Also remember that sometime auntie asked the question on this also. जयप्रकाश नारायण द्वारा अपॉइंट की गई ये कमेटी, इन्होंने जो लोअर की थी उसकी 18 to 21 जो कि प्रपोज की थी इलेक्शन कमीशन की। एक एक्सेप्शन की बात की जाए तो संथानम कमेटी जो थी, इसमें क्वेश्चन में जो दी गई है ये इनका फोकस जो था कमेटी का वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर ज़्यादा फोकस था, करप्शन को ख़त्म करने पे, प्रिवेंशन करने पे फोकस था गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी वजह से इन्होंने बनाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नॉट इलेक्टोरल रिफॉर्म स्पेशल, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग नहीं, बस ये याद रखना कि ये करप्शन प्रिवेंट करप्शन के लिए ये आई थिंक, बस इतना याद रखना, दैट्स द थिंग टू रिमेंबर। व्हाट इज़ द कॉमन in the election symbol of the Samajwadi Party, Telugu Desam Party and Manipur People's Party? I think the answer to this question is C. That is not C, cycle. B option, cycle. The answer to this question is cycle. The common election symbol shared by the Samajwadi Party, Telugu Desam Party, Manipur People Party is bicycle. Samajwadi Party, major party in Uttar Pradesh, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मणिपुर पार्टी इज इन मणिपुर। सो बस ये चीज़ बतानी थी मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट? ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चरल, ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। B, human relation approach deals with the relationship among the people working in organization. Okay. C is the behavioral approach. Behavioral approach emphasizes on the study of the development aspect of the administration. D, political economy approach emphasizes on the application of the economic methods and the models of the political problem. Let us see the explanation part. We are saying the structural approach focus on the economy and efficiency, that is correct. The classic or the structural approach theorized by Taylor and Fogel sorry, focus primarily on hierarchy, formal structure, hierarchy and specialization to achieve maximum economy and efficiency. Second is the human approach, but human relation approach. This is deal with the relationship among the peoples working in an organization. This is also correct. This is pointed out by Alton, Mayo and Hawthorne study. Focus
which focuses on the social and psychological factors, not physiological, psychological factors and informal interpersonal relationship with the organization. Next is the behavioral approach, emphasizes on the study of the development aspect of the administration. This is incorrect. The behavioral approach focuses on the individual and group behavior using scientific method. In the answer it is saying a behavioral approach and it should be behavior. It is not mentioning behavior, so it should be. It is given by Herbert Simon. The study of the development aspect is closely related to, and the study of the developmental aspect is more closely associated to the developmental administration. Political economic approach emphasizes on the application of economic method and political problem. That is correct. Okay, this approach applies economic principles to analyze political system and public policy problems. So option A, option B and option C is correct. Not C, D. A, B and D. So we have A is correct, B is correct, behavioral is not correct, D is correct. So answer to the question is A, B and D. Option A is correct. 113 question. Which of the following schemes are launched by the current government? PM Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay, this is launched by this government. Kisan Nyay, I don't know. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आई थिंक कोविड के टाइम ये हुई थी लॉन्च. सो लास्ट इज द ए और सी. ए, सी और डी हम दो ऑप्शन में आ गए, दो हमने एलिमिनेट भी कर दिए. तो ए और सी तो इनमें दिया हुआ है, ए और सी इसमें भी दिया हुआ है, एक तो एलिमिनेट हो गया. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ. तो देखते हैं क्या आंसर है इसका. सो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2015. ये तो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. ओके. किसान न्याय योजना ये सेंट्रल की गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टेट की है, छत्तीसगढ़ की. राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी ये. सो दूसरी नहीं है, तो बी. फिर भी हम दो में अट गए, सी और डी में आ गए हम. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना और गरीब कल्याण. ओके. प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ एंड वैल्यूएबल सेक्शन सपोर्ट टू द वनरेबल सेक्शन स्पेशली ड्यूरिंग कोविड. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ए नेशन वाइड कैंपेन ऑफ द प्रधानमंत्री फसल. अच्छा, ये फसल बीमा योजना की, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी है. सो ये भी सही है. सो ए, सी एंड डी आर करेक्ट. सो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिविक सोसाइटी ecosystem usually includes within its ambit non-profit organization. Yes. Online group, I don't know. Religious leaders, don't know. लेजिस्लेशन तो नहीं होगी ना सिविल सोसाइटी में, कानून थोड़ा बनाएंगे वो. डी तो नहीं होगा आंसर. ये तो है. ऑनलाइन ग्रुप से भी हो सकते हैं. रिलीजन लीडर्स, ये देखना पड़ेगा. 114. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो लेजिस्लेशन नहीं करेंगे वो, इससे आंसर हमारा नहीं आ रहा. पर ये याद रखना सिविल सोसाइटी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, इसको हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक द राइज ऑफ द प्लीवेंस. सो ये किताब किसने लिखी? जैसे कि टाइटल से तुम्हें पता चल रहा है कि ये कोई इंग्लिश किताब, कोई टाइटल इसका थोड़ा वेस्टर्न सा लग रहा है, फैंसी सा, तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यही फैंसी नाम है. बाकी तो सारे वही है. मार्था सेन इंडिया का, पार्था चटर्जी भी इंडिया के हैं, और ये सुहास पैल शेखर ये भी इंडिया के हैं, पर ये भी संजय कुमार भी तो हैं इधर. बस याद रखना कि ये इसका आंसर सी है इसका आंसर. नेक्स्ट मैच वाले आ गए भाई. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. डी रडोल्फ, अर्नेस्ट बार्कर, एल.टी. होपहाउस एंड एफ.ए. हायक. बुक्स के नाम है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी
and C is a principle of social and political theory. D is the constitution of liberty. So जो रडोल्फ एंड रडोल्फ डी रडोल्फ की किताब है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, दैट इज़ बी. सो ए का बी, ए का टू ए की में दिया, इसमें ए आंसर आ जाएगा 9116 का. आगे देख लेते हैं. अर्नेस्ट वार्कर का प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी. एल.टी. होपहाउस एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. E.A. Hayek the constitution of liberty. E.A. Hayek constitution of liberty. So the A is the correct answer. Next question. So again match the following. Hobbes, Locke, Rousseau and J.S. Mill. So come here, let's see here. Thomas Hobbes gave the absolute sovereignty in his book Leviathan. Hence absolutism, absolute sovereignty दे दी थी अपने बुक लेवियाथन में. तो Hobbes is absolutism. Hobbes absolutism is in 1-4. Here is the answer 1-4. Next, John Locke supported limited government. John Locke supported limited government and constitution, rule of law, protection of the natural law. Limited government, proportional representation, where it is? Option B, constitution government here. J.J. Rousseau, famous for popular sovereignty, general will. J.J. Rousseau, popular sovereignty, general will here. C here B, here A, last one is D, D is here. That is a J.S. Mill supported proportional representation to ensure free representation of minorities. So this is. So let us go to the next question. Again match the following question. Integral humanism, M.N. Roy. Total revolution, radical humanism, self-respect movement. I think क्वेश्चन रिपीट इटसेल्फ. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पहले भी इसने पूछा था और फिर से इसने पूछ लिया. तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का हमने पीछे पढ़ा कि इसका पेरियर था, तो डी का 3 हो जाएगा. D3 किस में दिया? D3 3 में दिया. हो तो ये डिफिकल्ट है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ इससे. सो उसके बाद हम चलते हैं. टोटल रेवोल्यूशन किसने बोला था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे आते हैं पहले. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कंसेप्ट गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय. सो 1 का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा. ए का 2 इज गिवन इन बी ऑप्शन ओनली. एंड टोटल रेवोल्यूशन इज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण. इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की बात की है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना. ये बी हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा. रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है वो M.N. रॉय है और पेरियर वी ऑलरेडी नो दैट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़. उनकी ये ऑथर हैं, उनकी बुक्स हैं. पॉलिटिकल पार्टी किसने लिखी है? एलीट क्लास जो थे किसने लिखी है? एलीट पावर एलीट, द रूलर क्लास एंड द माइंड एंड द सोसाइटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. ये पूछी जाती है क्लास पेपर में हर बार. रिसेंटली पूछी गई थी, 2021 में पूछी गई है. तो इनको तो याद करना हमें पड़ेगा ही. तो पॉलिटिकल पार्टी रॉबर्ट मिचल्स द्वारा. तो ए का 2 हो जाएगा, सभी में ए का 2 दिया हुआ है. सेकंड इज द रूलिंग क्लासेस. तो जी रूलिंग क्लास इज गिवन बाय मोस्का इज 3. सो बी 3 हो जाएगा. बी 3 2 में आगे 2 एलिमिनेट कर दिया हमने. अगर तुम्हें आता है तो मैं ऐसे ही करना पड़ेगा. पावर एलीट तुम्हें पता होगा, मिल्स ने दी थी पावर एलीट मिल्स. सो 3 का 1 एक में. अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम्हारा आंसर आ जाता. 3 ऑप्शन पता होता तो तुम्हारा आंसर आ जाता. उसके बाद डी पता था, 2 में आए थे. डी इज माइंड एंड सोसाइटी. पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी. आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड माई नोट्स, जिसको मैं पेपर्स में जाने से पहले एक बार पढ़ता हूँ. वो मेरा रिचुअल है, उनको मैं रिचुअल की तरह पढ़ता हूँ. इस बार मैं उनको भी मैं यूट्यूब पे ही करूँगा, तो हम साथ में कर लेंगे. तुम्हारी भी रिवीजन हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 120. हु हैड रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन? ऑप्शन ए एन टिकनर. बस इसको रट लेना, कुछ नहीं है. नेक्स्ट अगेन इज द फॉलोइंग. ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स is written by John Mearsheimer, that is
option 4, 1 का 4, here it is 1 का 4, 2 that is powers among nations, Hans Morgenthau, Hans J Morgenthau, that is B का 3, B3. Next is theory of the international politics, Kenneth Holtz. This is an easy question. I think I have read this before and therefore it seems easy, but examination में कुछ easy नहीं लगता अगर नहीं आता हो तो. So this is the option 2021. Option A is correct answer. Fried Zakaria is the from Wealth to Power. Next, which list 1 to list 2 again. Women group are given and their places are given where they form or whatever, their establishment. So I have no idea. Let us read from here. Forum Against Oppression of Women, FAOW, established in Mumbai following Mathura rape case protest. Okay. Next is Saheli in New Delhi. Stree Shakti Sangathan, Hyderabad. Vimochana Bengaluru. Okay. Vimochana Bengaluru, D. Saheli, I think in New Delhi. Yes, Saheli is B1 here, and D3 C1 here, both is given. One is forum, that is in Mumbai, I guess. So one is one B here. D is the correct answer. 1B, and here C. Stree Sangathan, Shakti Sangathan. These are the random questions. कभी कभार ऐसे पूछ लेता हूँ. Next. How the trade union and their parties affiliated: All India Central Council of Trade Union, Bharatiya Mazdoor Sangh, Indian National Trade Union Congress. I think Trade Union Congress का Indian National Congress के साथ ही तो C का 3 होगा. C का 3 in the two options B and C में है. Okay, next is the Labour Progressive Federation. So देख लेते हैं इधर. A है जो All India Central Council of Union Trade Union, that is All India Trade Union is a labor wing of the Communist Party of India, Marxist Leninist Communist Party. Okay, so A is A2 is here, so B4 आ जाएगा. B is भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, and C3 we have written 4-1 Labour Progressive Federation, that is Dravid Munnetra Kazhagam. Next question. Next, 124th question. We have theories and their thinkers. Constructive conflict, acceptance theory and indifference zone, hierarchy of needs and hygiene motivation theory. I have no idea. So the first is construction conflict, that is Mary Parker Elliott, that is A4, all A4. Exception theory and indifference zone, Chester I. Walker, B. Okay, B3. I come to two options. Hierarchy of needs, I think this is, I know. Hierarchy of needs, you might know, it is the Marshall, that's Abraham Maslow. C2 is here. We came to our answer. D is 1. Hygiene motivation theory, that Frederick Chang. I think this hierarchy of needs, this is also, we also study this question in paper 1, where we study about the teaching aptitude, or maybe teaching aptitude, I think, theories. So this is the thing. Let us go to the next question. You can read more about it. I don't think it is much important, but let us see it. She proposed the conflict should be viewed as a positive opportunity for integration and creation, problem solving, rather than something to be avoided.
Okay, next, Chester I. Warner. This theory suggests that authorities flow from bottom up, existing only when subordinates accept orders within a specific range of tasks they are willing to perform without questioning. Hierarchy of needs, Maslow. This motivation theory categorizes human needs into 5 pyramids, ranging from the basic physiological requirement to the high level self-actualization. Motivation theory, Friedrich Hartsburg. Two-factor theory distinguish between the hygiene factors that prevent dissatisfaction and motivators that create true job satisfactions. So these are the things to be discussed here. Next. Next question is about gain places and Jan Sunwai. What is Jan Sunwai? I think it is public hearing. Jan Sunwai को public hearing कहते हैं. So देखते हैं. कोर्ट केरिना इधर से ही देखते हैं. Let's see from it. Based on the historical records of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan movement in Rajasthan, the correct sequence, the first 4 public hearing, that is Jan Sunwais, are Court Kerina, first Jan Sunwai in 1994, Bhim, second Jan Sunwai conducted here, third Vijapura, third Jan Sunwai conducted here, Bijapur, sorry for that, third Jan Sunwai conducted here, Javaja, fourth Jan Sunwai conducted here in this block. So remember this, one is 1 1 1 1 only, 1 2 only, 1 2 is 2 here, and next is Bhima Jan Sunwai is second, Bhima is second, so second is 3 again. Third is the Bijapur and Bijapur third, that is C4 here, and Javajaf 1 D1. Next question, another chronology question, arrange the following conventions of rights in chronological order. The International Covenant on Civil and Political Right. I don't know, but I will read only in the sequence wise. First is D is the one. The Universal Declaration of Human Rights 1948, adopted by United Nations General Assembly as a foundational global standard for fundamental human rights. Remember that. Next is the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, multilateral treaty adopted by United Nations to commit parties to respect civil and political rights. That's all. Next is the American Convention on the Human Rights 1969. That is C option. An international human rights instrument adopted by the nation of the America in San Jose, Costa Rica. कि सबसे पहले जो है हमारा वो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1948 में आ गया था. उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो कि 1966 में आया, उसके बाद वो आता है. उसके बाद हमारा जो अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि कोस्टा रिका में आया था वो आता है. लास्ट में हमारा जो आता है वो आता है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन इन 1979. ये बिल एक इंटरनेशनल बिल है राइट बाय वुमेन के लिए लाया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा लाया गया. तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो होता है DACB हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, John Stuart Mill divides all actors of the individual into 2 categories: self regarding action and other regarding action. Statement 2, John Stuart Mill says liberty consists in not doing what one deserves. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. So let us see what he is saying. He is saying the statement 1 is correct. John Stuart Mill in his book On Liberty distinguishes between the self regarding action, that is action that primarily affect individuals himself only. Those actions that self regarding, there are other regarding action that affect other member of society, that is other regarding. So this distinction forms the basic of the Mill's harm principle. Second is option. Statement 2 he is saying that incorrect. The statement liberty consists in not doing what one desires. It's not Mill's view.
Mill argued that individuals should be free to pursue their own desires and way of life, provided they do not harm other. मिल कहते हैं कि इंडिविजुअल वो फ्री है अपने डिज़ायर और अपने वे ऑफ लाइफ को परस्यू करने के लिए, जब बस वो किसी को हार्म ना करें, ये वो कहते हैं. ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज पोजीशन इज़ दैट लिबर्टी इन्वॉल्व्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द हार्म प्रिंसिपल. एक वो उसकी मोस्ट रिप्रेजेंटेशन जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो बताते हैं कि लिबर्टी इन्वॉल्व करती है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन का और एक्शन का भी, जबकि वो किसी को बस उसमें यही एक एक्सेप्शन कि वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. दैट इज़ ओनली एक्सेप्शन. सो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. सो हियर इज स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. C is the correct answer here. So some additional information. If we talk about Mill, J.S. Mill, he talked about self-regarding and under-regarding actions, harm principle and individual liberty. Rousseau talked about popular sovereignty and general will. These are the keywords you need to remember in accordance with the each thinker or author. John Locke, natural right, constitutional government. Hobbes, as absolutism, sovereign authority. Okay, so the next question, what is the correct sequencing of these movement in India? The first is Quit India movement, non-cooperation movement, civil disobedience and total revolution movement. Have you studied about this revolution, total revolution movement? Let us see this one by one. The non-cooperation movement led by Gandhi in 1920. Civil disobedience movement, Dandi March in 1920, again by Gandhi in 1930. Next is non-cooperation movement, Do or Die slogan, again by Gandhi, Do or Die slogan in 1942. Total revolution led by Jayaprakash Narayan against corruption and authoritarianism in 1974. So let us see the correct sequence. First of all, we having non-cooperation 1920, civil disobedience 1930 by Dandi March, then Quit India movement, Do or Die slogan 1942, then last but not the least 1974 by Jayaprakash Narayan. So the answer would be B, C, A, D. Sorry, B, C, A, D. Option A is the correct answer. So the next, come to the next question. Arrange the following according to the chronology. Lahore Declaration, Tashkent Agreement, US nuclear. This is I think in 2008. 2008. Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. Let us study this one by one. ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, जून 10 1966 में. इंडो पाकिस्तान जो वार थी 1965 की, उसको ख़त्म करने के लिए. उसके बाद जो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन हुई थी 1971 में. इसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गई थी इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में. उसके बाद जो है लाहौर डिक्लेरेशन जो कि 1999 फेब में हुआ था, 21 फेब में. ये बस डिप्लोमेसी को चलाने के लिए हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज ताशकंद इज फर्स्ट. बी हेयर, बी इज ताशकंद इज फर्स्ट. देन कम द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. देन वी हैविंग द लाहौर in 1999 declaration, and last but not least is that Indo-US Civil Nuclear Cooperation Agreement 2008. This is for the major turnover of the Indo-US relation. Civil nuclear, remember the Civil Nuclear Cooperation Agreement. Civil Nuclear Cooperation Agreement. Next, 130 question. Again the chronology order. It is asking for the chronology order. This is question I think more of the environment. You can see the environment. Let us see this question. UN Declaration on Human Rights in 1948. Again this question has been asked again. UN Declaration. If you go back here,
You can see this question is asking, again ask here, look at here, Declaration on Human Right. सो रिमेंबर दैट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी साल में एक दो बार हो रहे हैं, तो पढ़ो भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम? तभी तो कहता हूँ PYQs ज़रूरी, PYQs इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन PYQs हो गए, दो क्वेश्चन तो वैसे से फंस जा रहे हैं। पता चल गया, अगर तुम्हें ये पता होता कि ये 1999 में, तुम्हें पता ये सबसे पहले आएगा 1948 में आएगा, तो डी सबसे पहले आएगा, तो डी ये आएगा, ये चला गया, ये चला गया, दो ऑप्शन बच गए। उसके बाद अगर तुम्हें ये पता कि जो रियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो 1992 में हुई थी, 92 में हुई थी ना, 1992 में हुई थी, तो तुम्हें पता कि ये काफ़ी बाद हुई थी। इसके बाद तुम्हें पता क्योटो तो उसके बाद हुई थी, ये 1997 में हुई थी, क्योंकि ये इसके अंडर ही हुई थी। मतलब ये UN जो कॉन्फ्रेंस थी, ये रियो डी जेनेरो, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, उसके बाद ही ये सभी इन्वायरमेंट के जो पैक्ट हैं ये आने लगे, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स सब आने लगे। तो देख सकते हो तुम, सी के बाद ए होगा, तो सी के बाद ए दोनों में ही ऐसा ही है, तो इससे भी कुछ नहीं हो पाया। तो हमें जाना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चन पे, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये 1966 में आई गई थी UN जनरल असेंबली द्वारा। सो ये 1966 में, यस। सो फर्स्ट डी आएगा, फिर बी आएगा, सो आंसर हमारा आ चुका है, फिर सी और फिर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज इंस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया सीधा ही। आर्टिकल 25 to 28 जो है, स्टडी फ्रीडम टू रिलीजन अफेयर, आई थिंक दिस इज 26 क्वेश्चन, 26। लेट्स रीड नेक्स्ट, फ्रीडम टू as to payment of taxes for promotion of any religion. Freedom as conscience, free practice, profession and propagation of religion. This is 25. I know C सबसे पहले आएगा, C सबसे पहले एक में, ये तो आंसर आ भी गया, देख लो, इतना ही करना होता है। एक बार देख लेते हैं, डी रह गया। Freedom as to attendance at religious instructions or religion worship in certain educational institutions. Freedom first, 25C, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 26A, freedom to manage religious affairs. 27B, freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. 28D, freedom as to attend at religion instrument or religious worship in certain educational institute. So remember this thing, important. Next, everything we are discussing is important because these are the PYQs. कोई भी पेपर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस होता है, उसके बाद उसके PYQs होते हैं। सिलेबस जो कि आप पढ़ते हो, PYQs के से ही आपको पता चलता है कि वो सिलेबस वो कितना किस डेप्थ तक वो पूछ रहा है, और उसी के हिसाब आप स्टडी करते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आई हैव नो आइडिया, आई विल अगेन डू टू द हेयर। शिरोमणि अकाली दल, आई थिंक दिस इज इन पंजाब 1920। द्रविड़ मुनेत्र, अगेन दिस पार्टी अगेन आस्क्ड 1949. Telugu Desam Party, again this is also 1982. Biju Janata Dal, this is I think Odisha ki party. So Shiromani Akali Dal, B option should be here. First B is here, B, then DMT, then TDP, and then Biju Janata Dal. Next question, arrange the following thinker in chronological order. Cheston Barker, MP Follett, Henry Foyle, David Waldo. So here Henry Foyle in 1841 to 1925. Mary Barker Follett 1868 to 1933. Cheston Barker is 1886 to 1961. Last here is Rich Waldo, that is 1913 to
2000. So CBAD, CBAD, B is the correct option. Next question. Which range the following schemes by order of launching years? Demonetization, goods and services tax, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Beti Bachao Beti Padhao. Again come to here. Jan Dhan Yojana in 2014, Beti Bachao Beti Padhao 2015, demonetization 2016, GST 2017. If you know कि GST 2017 and this is 2016, then again you may solve the answer. AB here. You may not be able to solve this question by this, but remember demonetization सबसे पहले नहीं होगी, प्रधानमंत्री जन धन सबसे पहले आई थी. So option C is the correct. Option D is correct. C D A B. Let us go to the next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reasoning. Let us see. Until philosophers are kings and prince of the world, have spirit and powers of philosophy, cities will never have rest from their evils. Reason. The Republic aims at representation of human life in state perfected by justice and governance according to the idea of good. In the light of the first statement, choose the most appropriate answer from the option given below. A. Both A and B are correct and A and R are correct and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C. A is correct but R is not correct. D. A is not correct but R is correct. Let us see the explanation here. Assertion is correct. The statement is from the Plato's famous work The Republic. Plato argues that the society's problem would end only when philosopher king ruled and rulers become the true philosophers because they possess the wisdom and knowledge of the true of justice and the good. प्लेटो कहते हैं अपने रिपब्लिक में कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो तभी ख़त्म हो सकती है जब फिलोसोफर्स जो हैं वो किंग बन जाएं और रूलर्स जो हैं वो ट्रू फिलोसोफर बन जाएं या रूलर वो ट्रू फिलोसोफर बन जाएं, क्योंकि उनके पास विजडम होती है, अपनी बुद्धि विवेक होता है और समझ नॉलेज होती है, जिससे वो जज कर पाते हैं. उनके पास नॉलेज ऑफ जस्टिस होता है और गुड की नॉलेज होती है. एंड रीज़न भी करेक्ट है. इन रिपब्लिक द प्लेटो sought to describe an ideal state based on justice and governed according to the idea of good. The philosopher have knowledge of the good is therefore the most suitable ruler. Why is R the correct explanation? So it is the correct explanation. So why R is the correct explanation? The reason explains why Plato advocated philosopher king, since the ideal state aims at justice and is guided by the idea of good. Those who understand the good, that is the philosopher, must govern. Those who understand the idea of good must govern philosophers. The objective of the republic directly supports the assertion. So your assertion को support करता है. Therefore the answer should be both correct and R is the correct explanation. Here is the bit shortcut. Plato give the justice plus ideal state plus philosopher king plus idea of the good. These are given by Plato. Next is Aristotle. Constitutional government and the rule of law. Machiavelli, reason of state. Hobbes, absolute sovereignty by Hobbes. Let us go to the next question. Given below are two statements. Statement 1. Karl Marx agreed with Hegel that history unfolds itself according to a dialectical plan, but according to Marx, the idea were the result of the material conditions.
Statement 2. Dialectical materialism believes in the inseparability of matter and motion. Now in the light of the statement, consider. Let us see the explanation here. Statement 1, that is, the Karl Marx extracted the dialectical method of Hegel but rejected idealism. Hegel, history progresses through the development of ideas. Dialectical idealism. Marx, material and economic conditions shape ideas and institutions, that is historical materialism. Marx famously argued that Hegel's dialectics was standing on its head and need to be upside down, right stand up. मार्क्स जो थे वो कहते थे, वो एडवोकेट करते थे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को, जबकि जो हीगल थे वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म को एडवोकेट करते थे। वो कहते थे कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ से हिस्ट्री प्रोग्रेस होती है, जबकि कार्ल मार्क्स बोलते थे कि मटेरियल और इकोनॉमिक कंडीशन से इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को ज़्यादा एडवोकेट करते थे। और मार्क्स तो ये तो कह देते हैं कि हीगल का डायलेक्टिक्स है, वो हीगल अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, वो अपने सिर पे खड़ा है, उसको अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, वो ऐसे बोलते थे। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म होल्ड दैट मैटर इज प्राइमरी, मोशन एंड चेंजेस आर इनहेरेंट इन मैटर, कि मोशन एंड changes are inherent in matter. Matter cannot exist without motion. Matter cannot exist without motion. And motion cannot exist without matter. Thus, he believes in the intersection of the both. So again, read the situation. Read the question. Dialectical materialism believes in the inseparable of the matter and motion. Now again, matter is primary. Dialectical materialism holds that matter is primary. Motion and change are inherent in matter. He is saying the matter and motion are inseparable. So it is correct. So option 1 and 2 are correct. So option A, answer is option A. Yes, absolutely, option A is correct. Next question. Given below two statement, again assertion, reasoning. Assertion: a student of the comparative politics should study the behavior of voters. B, student of comparative politics has to deal with the entire political system. Now let us see the explanation part. Statement 1 is correct. He has to study the voter behavior. Comparative politics students study not only formal but also political behavior, include voting behavior, political participation. कहता है कि जो स्टूडेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का होता है उसको सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ना होता, उसको पॉलिटिकल बिहेवियर को भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें वोटिंग बिहेवियर आता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आती है, पॉलिटिकल कल्चर आता है, इंटरेस्ट ग्रुप आते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आती है। देयरफॉर वोटर बिहेवियर एक इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है। कहता है रीज़न भी करेक्ट है। कहता है मॉडर्न कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली आफ्टर द बिहेवियर रेवोल्यूशन, again reason is correct. Modern comparative politics, especially after the behavioral revolution, studies the entire political system rather than only governmental institution. This includes both formal and informal political processes. Thinkers such as Gabriel Armand and David Easton emphasize on the political system approach. Now why R is the correct explanation of A? So we know that option A is correct. Since comparative politics deal with the entire political system, it is necessarily include study of voter behavior as an important component of that system. Thus, the reason explain why voting behavior falls within the scope of comparative politics. Okay. ये कहते हैं कि जो इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो डील करता है किससे? स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर का, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस सिस्टम का। सो देयरफॉर ये एक्सप्लेन करते हैं कि वोटिंग बिहेवियर जो है वो स्कोप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में ही आता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बोथ आर करेक्ट।
and R is the correct explanation of A. Next, given below are two statements. Again, assertion reason. So he's saying that assertion is India has a hybrid system of government. Okay, and he's saying that the hybrid system combines two classic models, British tradition and American philosophies, American principles. Let's see, it is saying correct. We have adopted some principles from the American and some from the British. Let's see. Saying that India has a hybrid system, correct. Saying Indian constitutional system is often described as an hybrid or mixed system because it combines features of different constitutional traditions rather than strictly following one model. Reason: hybrid system combines two classic model, that is British tradition and American principles. It is also correct. Now, the Indian constitution incorporated from the British system is parliamentary government, yes. Cabinet responsibility, yes. Prime Minister as a real executive, yes. And rule of law. These all are we have incorporated in our constitution from the British system. Next is what we have constituted from the American system: written constitution, federalism, judicial review, fundamental rights, and independence of independent judiciary. So thus India's governmental structure is a blend of the British parliamentary institution and American constitutional principles. Therefore, it is the correct explanation. So A is the correct option here. Question 139. Given below, again assertion reason. Here is saying pressure group are involved in politics and policymaker process in India through direct and indirect means. Okay, saying the direct and indirect means. They inspire to come in power. How, why, when, how, कब आना चाहते हैं वो पावर में? वो तो नहीं आना चाहते पावर में. Again, wait a minute. He is saying that India is a hybrid system क्योंकि इंडिया ने दो क्लासिकल मॉडल को कंबाइन कर दिया, इसलिए इंडिया हाइब्रिड सिस्टम है. बट सिर्फ यही बात नहीं है, इंडिया ने बाकी वर्ल्ड से भी कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं, तो उस हिसाब से इंडिया हाइब्रिड सिस्टम है. तो हाइब्रिड सिस्टम हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इन्हीं की वो उनसे बना है. तो ये सही बात है, पर ये इसका एग्जैक्ट रीज़न मानना थोड़ा सा मुश्किल है. हाइब्रिड सिस्टम ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. What is written here? Okay, B is correct here. I have seen the answer key. Option B is they marked the answer B. But according to me, option A is correct. We'll see here later this question. Okay, what is saying? Is saying that प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं इंडिया में. रीज़न वो रहा है कि दे इंस्पायर, क्योंकि वो आना चाहते हैं पावर में. वो पावर में कब से आना चाहते हैं? पावर में तो आना ही नहीं चाहते. प्रेशर ग्रुप पावर में क्यों आएंगे? पावर में कौन आता? पावर में तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती. पॉलिटिकल पार्टी लाडले पॉलिटिकल पार्टी आती है पावर में. प्रेशर ग्रुप तो सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को. तो लाडले ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. पॉलिटिकल पार्टी ये तो गलत है. आर तो गलत हो गया. आर इज फॉल्स, ए इज़ करेक्ट. ये आ गया. पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ ले एक बार. रीज़न यहाँ भी गलती लिखा है. ट्रू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड पब्लिक में थ्रू डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्ट सच एज लॉबिंग करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को सबमिट करते हैं. मेमोरेंडम पिटीशन इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं. बाहर ही बोलते हैं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो लेजिस्लेशन को. ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं. पब्लिक के ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं, पब्लिक के ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं. मीडिया और एडवोकेसी नेटवर्क का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सेशन तो सही है. ये क्यों इनकरेक्ट है? ये लिखा है प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक
कैप्चर ऑफ पावर, यस, गवर्नमेंट नहीं बनाते, बिल्कुल सही बात। देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन इन फेवर ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो कर पाएँ गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस। द एस्पिरेशन हैज़ टू कम टू पावर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नॉट प्रेस क्लब। ये बात लाडले। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आंसर की में ये भी गलती होगा, इसका फिर यही होगा, आंसर की में ये भी गलत दिया होगा। एक बार देख लेना इसको। 138 क्वेश्चन, रुको मैं खुद ही देखता हूँ। गिवन द सिचुएशन, मैंने जो देखा है, अगर मैं एग्ज़ाम में होऊंगा तो मैं मेरे को सामने ये स्टेटमेंट होगी तो मैं तो इसका ए मार के आऊँगा। आंसर की में इसका भी दिया होगा, पर ये मैंने गूगल से निकाल लिया, गूगल के हिसाब से भी यही है, और मैं तो इसका ए मार के आऊँगा। तो अभी देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो ए मार के आता है एग्जामिनेशन में। ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, 140th क्वेश्चन। UN हैव डिफाइंड 12 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। 12 नहीं है, ये 8 है। और SDG 14 इज़ डायरेक्टली लिंक टू द गुड गवर्नेंस। नहीं, SDG 14 गुड गवर्नेंस से है नहीं है, तो दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। स्टेटमेंट बी हो जाएगी करेक्ट, सी भी यही है, पर दोनों ही हो जाएंगी फॉल्स। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है वो उसने 8 UN ने 8 करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं गुड गवर्नेंस के, ना कि 12 दिए हैं। कौन से दिए हैं? पार्टिसिपेशन दिया है, रूल ऑफ लॉ दिया है, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, सेंसरशिप कंसेंसस ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इक्विटी इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं, और काउंटेबिलिटी की बात करते हैं। ये 8 जो चीज़ों की बात करते हैं वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर द स्टेटमेंट द UN हैव डिफाइंड 8 12 वाली ये इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। SDG डायरेक्टली एसोसिएटेड विद गवर्नेंस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। SDG 14 इज़ SDG 16 पीस और जस्टिस की बात कर। 14 जो है आर्टिकल SDG 14 वो बात करता है कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन सी एंड मरीन रिसोर्सेज। Hence SDG 14 is not directly linked to improvement of governance. Okay, so with this we finished the December 2021 UGC NET पेपर। रिमेनिंग 10 जो क्वेश्चन हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, वो तो आप कर ही लोगे। आपने MA की है, इतना नहीं कर पा रहे तो फिर तो वही लानत है आप पे, ये तो आप कर ही लोगे। तो with this I finish this video. We'll come with the next series, next videos. This series will continue, but I think next video I will come to 2025 दिसंबर वाला पेपर, क्योंकि मेरे को लगता है कि पीछे चलना चाहिए, हमें पीछे से आगे से पीछे जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न हमें पीछे वाला ज़्यादा पता होगा तो उसके हिसाब से ही वो पेपर सेटर होता है। तो विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच for watching.